So Jai Hind, good afternoon, and a very warm welcome to Malhotra's IAS. I am Piyush, and we are here with the weekly current affairs class for polity and governance. I hope that you are doing good, and those of you who are preparing for Haryana Civil Services are also, keeping pace with the current affairs because that is a very crucial part of your preparation. All right, so good afternoon, Gajanan, Navi, good afternoon, Nisar. All right, so let's begin with today's session, and the topics that we are going to take are criminalization of politics, and a report by Association for Democratic Reforms is there that we are going to analyze. Along with that, we are going to take a question regarding the first topic itself, because you know that Seize the Mains initiative is being conducted by Surbhi ma'am, and that also has been interlinked with our daily weekly current affairs sessions, right? So let's, without without wasting further time, these were some of the topics that were carried across the different print and electronic media. Hindu also carried, Indian Express also had some articles. That Association for Democratic Reforms, which is a body which conducts all kinds of research pertaining to what is the electoral situation prevailing in the country. So they have just analyzed the recently concluded Rajya Sabha elections, and what they have found out is that multiple MLAs or multiple candidates who ended up being elected as MLAs, जो विधायक बनके, जो जीत के विधायक बनके आए हैं और सांसद बनके आए हैं, my bad, उनके खिलाफ जो हैं declared criminal cases हैं, और this is not good for Indian democracy, right? So this was one article in the Quint, this was another article in the Hindu, right? So before further going, let me just share with you the question that is going to be linked with this topic. इसके basis पे आप you can try and answer this question, क्योंकि देखो डेली प्रैक्टिस करने के पीछे जो रैशनल है, जो लॉजिक है, वो ये है कि mastering the art of answer writing is not a single day task. It is not overnight, it's not an overnight event. You have to do that gradually. वो आपको gradually build करना पड़ेगा, and उसमें nothing better than writing one answer a day, right? If you're done with the syllabus, you're following current affairs, then certainly you are best placed to practice answer writing. So let me share the question which has already been posted on our website also. That is, criminalization of politics is one of the biggest threats to Indian democracy, and the directive word here is comment, right? So you have to comment on it in 150 words. It's a 10 marker, remember that. And you can submit your answers on this link. It's a hyperlink. You can just go in the description box of this video, and there also you will find this link. This link will directly land you up on the website where you can post, where you can submit your answer, right? So as we are getting a tremendous response regarding the submissions of these answers, multiple people, multiple aspirants, they really want to get their answers evaluated, right? Remember that it is a free of cost initiative. Our expert here, that is Surbhi ma'am, she is evaluating these answers by herself, right? And to make sure that your answer gets evaluated, please make sure that you submit your answer, you post your answer on the website by the end of today, right? Maximum by tomorrow afternoon, so as to get your answer evaluated. And also don't forget that it is not just going to be evaluated, you are also going to get the feedback for it, guys, right? So at least grab the opportunity, avail the benefits, and get going in your preparation. चलिए, so let's begin with the topic. जो Association for Democratic Reforms ने analysis of criminal and financial details of newly elected MPs of Rajya Sabha June 2022 is when the report or the analysis has been done, right? So ये एक combined analysis थी by the National Election Watch and ADR regarding the recently concluded Rajya Sabha elections, and they have found out what? They have found out that 40% of the newly elected member of parliaments, they are already having criminal cases, declared criminal cases. 12% are having serious criminal cases pending against them. So let's delve further into the topic. हम क्या discuss करेंगे? हम discuss करेंगे कि what exactly do we mean by criminalization of politics? इससे हम क्या समझते हैं? ADR क्या है? और इस पूरे concept में पूरा जो ये criminalization of politics है, what are the reasons behind it, what the Supreme Court has to say, what the Election Commission has to say, and how can we go about tackling this challenge or this menace which is jeopardizing the Indian political scenario. Okay, so पहले देखते हैं, कुछ ग्राफ्स एनालाइज करते हैं जो ADR की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं. दिस इज एन ओपन सोर्स, ADR की वेबसाइट से मैंने ये उठाए हैं, और ये 2022 के स्टेट असेंबली इलेक्शंस को अभी रिसेंटली जो हुए हैं उसको एनालाइज कर रहा है. तो देखो,
This is Uttar Pradesh, Goa, Punjab, Uttarakhand and Manipur, which the ADR has analyzed, and you can see कितने परसेंटेजेस जो हैं मिनिस्टर्स विद क्रिमिनल केसेस, 49% यूपी में, मिनिस्टर्स विद सीरियस क्रिमिनल केसेस, ठीक है, दैट इज 44%. मतलब आउट ऑफ द टोटल एनालाइज्ड एमएलएस, जो ये ग्रीन डॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल मिनिस्टर्स दैट वर एनालाइज्ड बाय द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स. यूपी में काफी ज्यादा तादाद है क्योंकि इट इज क्लोज टू 50%, है ना, दैट द एमपीज दे आर हैविंग criminal cases, and 44, that is again close to 50%, are having serious criminal cases. ठीक है, similarly गोवा में you have again 44, 33%, पंजाब में you have 64% and 36%. उत्तराखंड is the best out of them, I would say, क्योंकि 9 में से 9 जो एनालाइज किए गए उसमें से none of them have serious or criminal cases pending against them, राइट. बट यस, करोड़पति 100% है. मतलब कि इससे क्या प्रूव हो रहा है कि ये देखो जो ये येलो डॉट है ना, ये एनालिसिस, दिस इज सिंपली शोइंग दैट यू नीड टू हैव मनी पावर सो एज टू विन एन इलेक्शन. ठीक है, मसल पावर एंड मनी पावर, मतलब कि आपके पास पैसा अच्छा खासा होना चाहिए. ओनली देन यू विल बी एबल टू फाइट सक्सेसफुली एन इलेक्शन एंड end up being a successful candidate or end up being an MLA or an MP, right. ये साफ साफ दिख रहा है क्योंकि देखो उत्तराखंड में जहां पे 0% है ऐसे elected legislators who are having tainted backgrounds, who are having criminal cases, serious criminal cases, ठीक है, ऐसे नहीं है यहाँ पे उत्तराखंड में, लेकिन still they are crorepati's, they are people who can wield this money power and get elected, right. Then coming to Manipur, again that is good, you have 0% of the people or the total ministers analyzed with criminal or serious criminal cases against them. But remember, still you have 100% with properties not less than a crore, right. So that is the state assembly elections 2022. Now let's compare it with the 2021 state assembly elections. So here you had West Bengal, Assam, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry which went to poll, है ना. और यहाँ पे भी the situation is still grim. 49%, 27%, 71%, 60% and 43%. मतलब यहाँ पे 0% वाला तो कोई भी नहीं है. This is again winners with criminal cases and winners with serious criminal cases. That is this sharp red. 39, 22, 27, 25, 20. And crorepati winners are almost, you can say, again 83, 86, 55, 67 and 54. That is more than half of the people who won are having good amount of money power which they can wield. समझ रहे हो इस चीज को कि अच्छा खासा पैसा अगर आपके पास खर्चने के लिए है तभी आप सोच सकते हो. दिस इज, है ना, ये ऐसा कुछ नहीं है कि it's an open secret, right. ऐसा नहीं है कि it's being revealed for the first time, but yes, this is something which is actually marring the Indian political system, Indian electoral system rather I should say, है ना, कि सिर्फ पैसे वाले ही हैं या कह लो कि जो मसल पावर और मनी पावर wield कर सकते हैं, they are the ones who actually end up winning the election. चाहे कोई साफ इमेज वाला, कोई, है ना, जो टेंटेड क्रिमिनल बैकग्राउंड से नहीं आता, if at all the person stands, then the chances of such person winning the contest, winning the election is really low, right. So that all we are going to discuss. But before that, let's quickly take a look at another graph that is for the Lok Sabha 2019 elections, that is 17th Lok Sabha. इसमें criminal cases 43% of the winners have, 29% serious criminal cases, 88% crorepati MLA MPs, women MPs only 15%, just 15% women MPs. Now this shows that how skewed your parliament is in terms of gender representation, or when it comes to gender justice, is your parliament really providing that gender justice, right. Then illiterate to 10th pass MPs, that is 11%, certainly not a good thing or not a thing to be appreciated. चलिए, so ये तो हो गए कुछ statistics. Remember, if you have certain statistics to up your sleeve, you have some statistics up your sleeve to corroborate your statements. अपने आंसर में अगर आप कुछ statistics को sprinkle करते हो, that really corroborates, that lends weight to your answer, and you end up fetching more marks, right. चलिए, so let's move to what exactly is this phenomena, criminalization of politics. देखो, simple सी बात है, when people who are having criminal backgrounds, they start participating in politics and they also start
पार्टिसिपेटिंग इन दी इलेक्टोरल प्रोसेस, कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए खुद खड़े हों आके, है ना। सो जो ऐसे क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग हैं, व्हेन दे स्टार्ट कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड दे आल्सो गेट इलेक्टेड और सिलेक्टेड एज ईदर अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। चाहे विधानसभा की बात कर लें हम, चाहे हम लोकसभा की बात कर लें, चाहे हम राज्यसभा की बात कर लें, चाहे हम अगर किसी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, विधान परिषद, है ना, तो उसके इलेक्शंस में when these people get elected to the legislature, that then we say that it is criminalization of politics that is happening, कि पॉलिटिक्स में ऐसे लोग एंटर करके अब लॉ मेकर्स बन रहे हैं, who are actually the law breakers, कि they themselves are law breakers, they are the ones who are on the wrong side or on the bad footing of the law, and still they are ending up becoming themselves law makers. तो देखो, इससे सबसे पहला जो संदेश जाता है या पहला मैसेज जो जाता है, that your democracy is being run by such people who themselves are the lawbreakers, right, which certainly weakens your democracy. And apart from that, what is the message that is being communicated to the population, to the voters of the country, and certainly who are the citizens? इसके साथ साथ सोचो जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो अगर इस एनालिसिस को थोड़ा सा स्टडी करके देखें तो व्हाट इज द मैसेज दैट दे गेट, कि यार चुनाव में चाहे किसी को भी वोट कर लो, इफ मोस्ट ऑफ द पीपल आर विद टेंटेड or with criminal backgrounds, then what is the whole purpose of having such a mammoth exercise that is having so great elections or so big elections in the country, right? So that sends out a very negative message to the people, to the citizens of the country. अब बात आती है कि फिर क्या इसके पीछे कारण है, what are the reasons which can be cited for criminalization of politics. तो देखो, सिंपल सी बात है कि it is not, it cannot be simplified. There are multiple reasons beneath the carpet which have to be analyzed, and the most important cause, as said by many of the academics, many of the legal experts, many of the legal luminaries of the country, कि जो politicians और bureaucracy के बीच में एक unholy nexus है. Now what is this unholy nexus? Unholy nexus ये है that they both are hand in glove when it comes to corruption, when it comes to unethical practices, right? And this is what is leading to criminalization of politics. और ये एक बहुत बड़ा कारण है that you have the bureaucracy or the officers which you yourself aspire to be one day, the IAS which you want to be one day, they are also most of the times, I'm not saying all the or the entire bureaucracy, but yes, some bad fishes among them, right? वो जो है जरूर इस चीज में पॉलिटिशियंस का या कह लो ऐसे टेंटेड लोगों का साथ देते हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ठीक है। फिर मसल पावर और करप्शन जो है इसके साथ एक इंट्रिकेबली लिंक्ड रीजन है ना, कि जिसके पास पैसा है, ही इज एबल टू इन्फ्लुएंस, ही इज एबल टू बाय वोट्स, ही और शी इज एबल टू इन्फ्लुएंस दी वोटर्स, एंड सर्टनली ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के अगेंस्ट जाता है, राइट? कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है ना यार, आप जो अपनी फ्री विल से किसी को वोट डाल रहे हो, अगर वो वोट ऑलरेडी मैंने खरीद रखी है पैसे देके, या फॉर दैट मैटर कोई और एडवांटेज या कुछ और प्रॉमिस करके, है ना, या कुछ काइंड में देके, तो सर्टनली दैट इज नॉट फ्री एंड फेयर, दैट इलेक्शन इज नॉट फ्री, दैट इज नॉट फेयर, है ना। इट इज पुटिंग समबडी एल्स जिसके पास वो मनी और मसल पावर नहीं है एट अ डिसएडवांटेजियस पोजीशन, है ना, तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट, right? So at the time of election, political parties, they spend huge sums of money buying votes for another illegitimate purpose. अब भाई ये illegitimate purpose क्या होगा? ये ultimately they are going to do corruption only, right? कि अगर मान लो 5 करोड़ या 25 करोड़ कोई इलेक्शन में खर्च कर रहा है, तो certainly वो कहां से उसको रिकवर करेगा? He or she, the person who is going to get elected by spending that much amount of money, that person invariably, or chances are very high, the probability is very high that that person, when he or she becomes an MLA or MP for that matter, is going to indulge into corrupt practices. And along with this bureaucracy, this unholy nexus, both of them are going to do what? They are going to plunder, they are going to loot the wealth of the country, or you can say the taxpayers' money, right? फिर poor governance या कह लो सुशासन की जगह कुशासन जो है, that also leads to criminalization of politics. ठीक है, देखो सिंपल सी बात है यार, हम गवर्नेंस के साथ भी इसको एसोसिएट डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि the honorable prime minister, he always talks about sushashan, he always talks about good governance, he always talks about people centric governance. So any governance for that matter which rests upon
people with criminal backgrounds entering the legislative bodies of the country can never be good governance. वो good governance हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें जो है मिस गवर्नेंस के एस्पेक्ट्स होंगे, सच एज करप्शन, राइट? सो दैट इज हाउ इट इज ऑल्सो लिंक्ड विद, या कह लो ये भी एक और रीजन है। फिर इसके साथ देखो, कुछ आप इंडियन सोसाइटी के साथ भी रिलेट करके देखो। The people who have studied Indian society would be able to better appreciate it, and or the people who are having sociology optional, maybe they'll be able to better relate it. That still, in our social setup, we tend to vote for a person who either belongs to my religion or my caste or my community, ignoring that कि कोई दूसरा व्यक्ति जो किसी में भी और रिलीजन या किसी और कम्युनिटी या किसी और कास्ट को बिलोंग कर रहा है, वो ज्यादा बेटर है अगर मैं उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड देखूं, या मैं ये देखूं कि क्या उसके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं या नहीं है, राइट? सो दैट काइंड ऑफ पोलराइजेशन टुवर्ड्स वंस कम्युनिटी, टुवर्ड्स वंस कास्ट, दैट आल्सो इज वन ऑफ द रीजन फॉर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कि डिस्पाइट दैट पर्टिकुलर पर्सन, है ना, कि उसके खिलाफ हो सकता है क्रिमिनल केसेस हों, बट स्टिल यार क्योंकि नहीं यार ये जो बंदा है ना, ये मेरी कम्युनिटी या मेरी कास्ट को बिलोंग करता है, आई विल एंड अप वोटिंग फॉर दैट पर्सन, राइट? सो आई एम नॉट गोइंग वेदर that is right or wrong, but yes, that is something which is prevailing in our society. Then lack of political will. अब इसमें हम सुप्रीम कोर्ट को भी डिस्कस करेंगे आगे during the course of this lecture, but lack of political will का यहाँ पे मतलब ये है कि देखो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं, या इलेक्टोरल सिस्टम में जो भी रिफॉर्म्स और जो भी सुधार लेके आने हैं, whatever are the improvements that have to be made, वो आएंगी कहाँ से भाई? वो अल्टीमेटली आएंगी आपकी पार्लियामेंट से। But the point is कि अगर इस पार्लियामेंट में it is the law breakers which are entering this parliament, so can we expect this parliament to bring in such kind of reforms? है ना, वो बात आती ना कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? Who will bell the cat, right? So खुद सोच के देखो कि अगर लॉ ब्रेकर्स ही आपके लॉ मेकर्स बनेंगे, वही पार्लियामेंट में जाके पार्लियामेंटेरियंस बनेंगे, वहां बैठेंगे, तो हम ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं, या हम क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ऐसे कुछ लॉज और स्ट्रिक्ट लेके आएंगे, या ऐसे कुछ नए प्रोविजंस ऐड करेंगे लॉ में, विच विल एंड अप इन दोज पीपल बीइंग थ्रोन आउट ऑफ द पार्लियामेंट, या फिर कह लो इन द फर्स्ट प्लेस सच पीपल नॉट इवन गेटिंग अ चांस टू फाइट इलेक्शंस एंड गेट इलेक्टेड एज लॉ मेकर्स? आप खुद मुझे बताओ टाइप करके, यस या नो करके। यस, डू यू एग्री विद दैट? है ना, बिल्कुल कॉमन सेंस या लॉजिकल भी लगती है बात कि यार अगर ऐसे लोग जो हैं पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में जाके बैठेंगे, देन सर्टेनली वी कैन नॉट रियली और प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक्सपेक्ट दोज पीपल टू ब्रिंग इन सच काइंड ऑफ रिफॉर्म्स, राइट? हाँ जी, गुड आफ्टरनून अनुराधा, गुड आफ्टरनून नेहा, अनस एंड रोहित। इट्स ऑल राइट दैट यू आर लेट, कोई बात नहीं, हम डिस्कस करना स्टार्ट ही किया अभी हमने, चलिए ठीक है। फिर इसके साथ साथ देखो कि एक जो है ना, स्टार्टिंग से अलग अलग, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, it is not just one party, cutting across the political spectrum in India, cutting across various political parties in India, they have been notorious for not introducing electoral reforms, कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी भी सरकार रही हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा कोई भी एफर्ट नहीं किया जो हम कह सकते हैं कि एक सीरियस एफर्ट था so as to bring electoral reforms, या फिर कह लो कि ऐसे लोगों को प्रिवेंट कर पाए, जो प्रिवेंट या प्रोहिबिट कर पाए कंप्लीटली फ्रॉम विनिंग और फ्रॉम फाइटिंग एंड विनिंग इलेक्शंस, ठीक है? तो इसलिए किसी एक पार्टी की गलती नहीं है, यस इट इज ऑल पॉलिटिकल पार्टीज व्हिच हैव टू हैव द कंसेंसस, which have to share the blame, right? It is not just one or A or B political party, this is across the political parties. फिर इसके साथ साथ लिमिटेड अवेयरनेस अमंग्स दी सिटीजंस और दी वोटर्स, राइट? कि भाई कैंडिडेट्स जो हैं क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स वाले, उनके बारे में वोटर्स को भी अवेयरनेस होनी चाहिए, और इस अवेयरनेस के बेसिस पे ही दे हैव टू मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस कि क्या दे आर गोइंग टू वोट फॉर सच अ पर्सन, और वेदर दे शुड इन द फर्स्ट प्लेस वोट फॉर सच अ पर्सन। देखो सिंपल सी बात है, यू कैन नॉट जस्ट एक्सपेक्ट ऑल द एथिकलिटी फ्रॉम द पॉलिटिशियंस or the leaders or the bureaucracy. That has to be shown by the people, that has to be shown also by the citizens, that has to be shown also by the voters of the country, कि आप भी तो you also go and vote ethically। सिंपल सी बात है ना यार, कि अगर आप ही वोट करके ऐसे लोगों को जिता रहे हो, तो then what is the use of it, है ना? तो हम सिंपली सिर्फ जो है पॉलिटिशियंस को या पॉलिटिकल पार्टीज को या फिर सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकते, इट हैज ऑल्सो टू बी
the citizens or the voters who have to take the blame, right? चलिए, आई बिलीव यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स इस बारे में क्या कहती हैं बिफोर गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशंस। सो 179th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन दैट हैज मेड सर्टेन ऑब्जर्वेशंस, इन्होंने कहा है कि भाई अमेंडमेंट्स लेके आओ आरपीए में, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। और इन्होंने कहा कि यार जो द पीपल हु आर हैविंग क्रिमिनल बैकग्राउंड्स दे शुड बी डिस्क्वालिफाइड फॉर 5 years or until they are acquitted, that you do not allow them in the first place to fight the elections, right? And it also recommended that person who wants to contest the election must furnish details regarding any pending case with the copy of the FIR and all the assets. अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी एक ऑर्डर है, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ देखो कि जो भी लॉ कमीशन ने एटलीस्ट अपनी 179th रिपोर्ट में रेकमेंड किया था, none of these recommendations have been followed by any political party, right? No action has been taken because no political party actually wants to end up, curtailing their winnability factor. इसके ऊपर आते हैं कि कैसे winnability factor के साथ ये फिनोमिना जो है linked है, right? Now coming to the observations by the Supreme Court. देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो है साफ साफ कहा हुआ है that every political party will have to declare on their website, in the local newspapers and also their social media handles. Why social media handles? Because we all know that in today's age, it is Twitter, it is Facebook, it is Instagram, where many, political parties are very actively connecting with the voters or with the citizens. So bhai, agar aap itne actively, if you are making those many efforts to connect with the population, with the citizens, with the voters of the country, ये बताने के बारे में कि आप क्या मैनिफेस्टो में प्रॉमिस कर रहे हो या आप क्या करोगे पॉपुलेशन के लिए, इलेक्टोरेट के लिए, इफ यू आर वोटेड टू पावर, देन इट इज ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी पॉलिटिकल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी ये बताए कि यस, दिस कैंडिडेट इज हैविंग दीज मेनी पेंडिंग क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट हिम और हर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में ये ऑर्डर जो है ना, इट हैड given this order that people who are having antecedents or people who are fighting who are the candidates of the political parties, that political party should ensure that the criminal antecedents of those candidates they are published, ठीक है। और वो कहाँ हो सकता है, लोकल न्यूज़पेपर में हो सकता है, पार्टी की जो वेबसाइट है वहां हो सकता है, एंड सोशल मीडिया हैंडल्स पे हो सकता है ना। ये मैंने आपको बता ही दिया ऑब्वियसली कि 2014 के लोकसभा इलेक्शंस के बाद तो दिस हैज बिकम अ ह्यूज इट्स अ ग्रेट मीडियम फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू कनेक्ट विद द वोटर्स। ऑलराइट, फिर इसके साथ साथ देखो दैट व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट हैज बीन द रोल ऑफ पार्लियामेंट एंड पॉलिटिकल पार्टीज, कि सिंस पॉलिटिकल पार्टीज को हमने टच किया है अभी, है ना, तो इस बारे में ये देखते हैं कि पार्लियामेंट का क्या रोल रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल रहा है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मनीषा, जस्ट ज्वाइन द सेशन, वेलकम। All right, so look, when we talk about the legislature, चाहे हम संसद की बात कर लें, चाहे हम विधानसभा की बात कर लें, मतलब कि चाहे हम यूनियन के लेवल पे बात कर लें या फिर हम we talk about at the level of the state, at both the levels, especially or particularly so at the level of the union, the parliament has been found very slow or wanting in addressing this issue, है ना। और उसका रीजन अभी देखा हमने कि भाई अगर if law breakers themselves are the lawmakers, certainly this is what you can expect out of your legislature, right? This is what you can expect out of your parliament, and that is what is happening also. So coming to the political parties who are actually, political parties are the ones who are fighting the elections or who are ultimately sitting in the parliament. So they are extremely reluctant to change their ways, and देखो इसकी जस्टिफिकेशन भी देती है। ऐसा नहीं है कि when the spokespersons of these national political parties, of these political parties, they come on news channels and they give their opinion, they are asked these tough questions by some of the independent news houses of the country, तो दो justifications broadly वो देते हैं इस चीज को justify करने के लिए that so what if the person is having some pending criminal cases against him or her, still he is not guilty, ठीक है। तो देखते हैं दो मेजर रीजन क्या है। देखो पहला रीजन तो है विनेबिलिटी वाला, कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी वांट्स टू इंश्योर दैट whatever or whichever candidate is being given a ticket to fight the election, that person should win the election. तो सबसे पहली चीज जो है जिसको तवज्जो दी जाती है अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन, अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, सब पॉलिटिकल पार्टीज ये करती हैं,
ठीक है, नोबडी इज अ होली काउ हेयर। तो सब लोग ये देखते हैं कि भाई चाहे क्रिमिनल केसेस हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो व्यक्ति समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है या चाहती हैं, if they want to do good for the society, then what is the harm in it, right? And this winnability clause is an attempt by the party to absolve itself of all the blame, कि भाई देखो पार्टी की कोई गलती नहीं है, अगर ये व्यक्ति जीत सकता है तो हमने इसको टिकट दे दी और बात खत्म हो गई, ठीक है। और अल्टीमेटली जो ये व्यक्ति है इसको लोगों ने तो चुन के पार्लियामेंट भेजा है, सो इट इज द वोटर हु इज डिसाइडिंग। हमने थोड़ा डिसाइड किया कि ये जीते या हारे, ये डिसाइड तो किसने किया, वोटर ने किया अल्टीमेटली। हमने सिर्फ कैलकुलेट किया कि ये विनेबल रिजल्ट दे सकता है, वेदर दिस पर्सन कैन एक्चुअली फेच a winning position, actually land up himself or herself into a winning position, but ultimately तो हाँ जी, हाँ जी। All right, so let's just wait for us to reconnect. There was some glitch in the network. Yes, all the people who are connected with us live, let me just read the comments. People are saying that it's buffering. Hanji, Rushi, is it still buffering? I think now we are good to go. We are connected. We are connected again. There was some glitch in the network, right, from the service provider. Is it clear now, guys? Please give me a confirmation once in the comment section. Just type a yes or just type a thumbs up, and we'll just resume with the class. All right, great. Thank you so much for the confirmation, and really, apologies from all right, so let me just confirm it once again. यार कुछ power failures हो रहे हैं ना, there is something going on with the electricity department. I don't know what is wrong with them, but yes, there are certain abrupt power shortages or outages that are happening, due to which this glitch happened, right? So I think still people are connected with us, and we are connected once again, right? Are we connected? Okay, great, ठीक है. All right, so let's resume without further delay. Right, so the first thing, हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज जनरली क्या करती हैं, दो मेजर आर्ग्यूमेंट्स देती हैं टू फील्ड और टू गिव पीपल विद क्रिमिनल बैकग्राउंड्स द टिकट्स टू फाइट इलेक्शन. तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या था कि विनेबिलिटी फैक्टर, कि हमें क्या देखना है, पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती हैं कि हमें देखना है कि भाई विनेबिलिटी फैक्टर क्या है, क्या वो कैंडिडेट इलेक्शन जीत सकता है या नहीं जीत सकता. बाकी उसके बाद की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, वोटर के ऊपर है. इट इज द वोटर विच इज एक्चुअली making that candidate win or lose the election. So we are not to be blamed. हमारे ऊपर बिल्कुल भी जो है there is no responsibility which lies. ठीक है, ये है पहला आर्ग्यूमेंट. दूसरा आर्ग्यूमेंट देखो which the political party cite is that कि these are examples of vendetta politics. What does vendetta politics mean? इसका मतलब ये है कि जस्ट टू टारगेट योर ओपोनेंट्स, जस्ट टू टारगेट द कंपटीशन. कि अगर कोई मान लो देयर इज अ कैंडिडेट ए एंड देयर इज अ कैंडिडेट बी, दिस बिलोंग्स टू पॉलिटिकल पार्टी 1 एंड दिस बिलोंग्स टू पॉलिटिकल पार्टी 2. सो दिस पॉलिटिकल पार्टी 1 will just file a case against the candidate B who belongs to the second political party, just to target the candidate of the opposition political party or the competitor political party. तो ये कहते हैं कि भाई this is nothing but this is only vendetta politics. ठीक है, कि false cases, this B candidate, इसके खिलाफ जो हैं these are false cases which are being filed and this person is innocent. This person is not guilty. ठीक है, ये सिर्फ जो है टारगेट करने के लिए बाय आवर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स सच फॉल्स बेसलेस फ्रिवलस केसेस आर बीइंग फाइल्ड. एक तो आर्ग्यूमेंट ये हो गया किसका, वेंडेटा पॉलिटिक्स का. और दूसरी चीज पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि अगर हमारे प्रत्याशी के खिलाफ या हमारे कैंडिडेट if there at all there is an FIR and a case being registered against our candidate, then also what is the
legal jurisprudence, what is the theory or the doctrine which we follow, that is innocent until proven guilty, कि जब तक जो है कोर्ट उसको कन्विक्ट नहीं करता व्यक्ति को, until that point that person is innocent. He or she might be accused, but he or she is not yet convicted by a court of law in the country, and hence इसीलिए you have to assume, you have to presume that the person is innocent. ठीक है, तो ये प्राइमरीली दो आर्ग्यूमेंट्स जो हैं दिए जाते हैं by the political parties to allow themselves, or you can say to absolve themselves of all the responsibility for fielding such candidates or for allowing such candidates to fight elections on their ticket. ठीक है, अब देखो इलेक्शन कमीशन ने इसमें क्या कहा है. इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि भाई देखो, it has suggested some safeguards against vendetta politics. हमने अभी we just discussed vendetta politics. I believe vendetta politics is clear to everybody, right? It is just the targeting of the candidate fielded by the opposition or the rivals of your own political party to target such person, right? Okay, so what has the election commission said? इन्होंने कहा है देखो सिंपल सी बात है, only offences that carry an imprisonment of at least 5 years should be considered. It means that serious criminal offences, right? Then the case against the candidate should be filed at least 6 months before the scheduled elections for it to be considered. कि देखो चुनाव आ गए, उस चुनाव के आने से 6 महीने से पहले अगर आपने वो केस रजिस्टर किया है, then certainly it will be considered. But to give this, you know, benefit, to give this, to resolve this argument of vendetta politics, अगर election से just prior 6 months to the elections, if the case is registered, if the case is registered, then it won't be considered. Sounds fair enough. It provides, you know, a resolution to this vendetta politics argument by the political parties. And finally, a competent court must have framed the charges, ताकि ये allegation ना लगा पाए कोई भी candidate या कोई भी political party कि देखो vendetta politics हो रही है हमारे against, सरकार जो है वो administrative machinery को या police machinery को या state machinery को misuse कर रही है हमें target करने के लिए, right? So when it will be a court, the chances are very high that it is going to be a fairly framed charge, right? So that is what the ECI or the election commission has said. Now coming to what we can suggest as, you know, potential solutions to tackle this challenge. तो देखो सिंपल सी बात है that details related to the pending criminal cases against candidates have to be uploaded by the political party on their website and elsewhere, as you know, said by the Supreme Court also. This should have been followed in letter and spirit. This should have been, मैं ये कह रहा हूँ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि देखो 2020 के बिहार असेंबली इलेक्शंस के बाद what happened was कि there's an advocate by the name of ब्रजेश सिंह. इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के क्योंकि ऑर्डर्स हैं, इट इज यू नो द ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी शुड डिक्लेयर द क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स ऑफ देयर कैंडिडेट्स ऑन देयर वेबसाइट्स एटसेट्रा. And in the 2020 Bihar Assembly elections, many or all the political parties, ठीक है, चाहे कोई भी बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, none of them had declared such, you know, criminal antecedents of their candidates on their websites. So this gentleman, he filed a PIL in the Supreme Court for contempt of court कि ये सारी parties जो हैं, they have done contempt of court by not following the orders of the Supreme Court. ठीक है, तो Supreme Court ने इन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर फाइन इंपोज किया एंड दे ऑर्डर्ड देम टू कंप्लाई विद देयर ऑर्डर्स. ठीक है, ऑब्वियसली बिकॉज दे हैड फेल्ड टू कंप्लाई विद द ओरिजिनल ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना, एंड इट वेंट इनटू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. बट उसके साथ साथ देखो, ये तो चलो एक बार की बात हो गई, जिससे ये दिख रहा है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स को भी लेटर और स्पिरिट में फॉलो नहीं कर रहे हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेड कि हम हर बार ये केस टू केस बेसिस पे कितनी बार करवाएंगे, एवरी टाइम यू कैन नॉट जस्ट कम एंड फाइल अ PIL. सो व्हाट द नीड ऑफ द आवर इज, या करने की क्या जरूरत है कि इलेक्शन कमीशन कुछ और इनोवेटिव करने की कोशिश करे, या इलेक्शन कमीशन जो है इट कम आउट विद समथिंग कंक्रीट. फॉर एग्जाम्पल, creating a phone application which will display the detailed criminal history of any contesting candidate, right? This app can be developed and this can be accompanied with a separate cell in the election commission, right, which will be monitoring whether the political party is complying with such declaration of criminal antecedents of the candidate.
वेदर दे आर प्रोएक्टिवली टेलिंग द पीपल दैट यस देखो जो हम इस व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, इसकी ये क्रिमिनल बैकग्राउंड है या इसके अगेंस्ट ये केसेस जो है वो पेंडिंग है, राइट। अगर जो है ये डिस्प्ले किए जाएं ऑन दिस ऐप एंड इलेक्शन कमीशन में एक सेपरेट सेल हो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच मॉनिटरिंग दैट कि ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है, ये जो सेल है, देन दिस कैन सर्टनली inform the Supreme Court if there is any non-conformity or there is any non-compliance. Getting a point? So इससे होगा क्या कि political parties will be on their toes, right? Why are they not declared innocent by the courts? Then sir, why the cases are still being pending if there are fake cases filed? निसार लोन देखो एक बात समझो ना कि कोर्ट भी तो है, the court will also go into the veracity of it, है ना। कोर्ट उसको केस को ऐसे तो नहीं डिस्पोज ऑफ कर सकता ना, इट विल हैव टू लुक इनटू व्हाट एग्जैक्टली आर द चार्जेस, इट विल लुक इनटू द मैटर एंड ओनली आफ्टर दैट द कोर्ट विल आइदर डिक्लेयर द पर्सन टू बी गिल्टी और इनोसेंट, राइट। आई होप यू हैव गॉट योर आंसर। चलिए, सो दिस कैन बी सम वैलिड solution to this, some potential solution to this, है ना, that any breach should be brought to the attention of the Supreme Court without any delay, and then we can expect the Supreme Court maybe to intervene, right। चलिए, इसके साथ साथ देखो कुछ वे फॉरवर्ड साइड करने के लिए what you can do is that देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है that this is the domain of the legislature. If we step into the domain of the legislature, then the Supreme Court is accused of judicial activism, judicial overreach. तो आप बोलते हो कि जी जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के डोमेन में स्टेप इन कर रही है, बट स्टिल द सुप्रीम कोर्ट जस्ट कैन नॉट बी अ फेंस सिटर, इट हैज टू समटाइम्स शो सम प्रोएक्टिवनेस। और इसीलिए हमें एक चीज यहां पे देखनी है दैट यस दिस इज प्रोबेबली a ground for or a semblance of hope which the Supreme Court gives us. How? Because it certainly has to be proactive, albeit limitedly, है ना, albeit in a limited sphere, not amounting to judicial overreach, ठीक है, but फिर भी Supreme Court जो है that certainly has given us a glimpse of hope, a semblance of hope, right। The investigation and the trial also should be expedited, कि जल्दी जो है उस केस का निपटारा किया जाए, as was pointed by निसार also in the comment section, कि भाई जल्दी से निपटाओ उसको, या फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जिनके बारे में एक बार सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बात कर चुका है that we can also, है ना, we can also think upon, we can also contemplate upon this idea of having fast track courts for such such purposes, कि इन केसेस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, कि ऐसा ना हो कि वो पार्लियामेंट का सेशन या पार्लियामेंट का पूरा टेन्योर निकल गया 5 साल का और उसके बाद डिसीजन आ रहा है, कोई फायदा नहीं उस चीज का, राइट। देन आरपीए आईपीसी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, इंडियन पिनल कोड एंड सर्टेन अदर स्टैट्यूट्स, दे आल्सो नीड टू बी अपडेटेड, दे आल्सो नीड टू बी अमेंडेड। बट अगेन द क्वेश्चन इज कि भाई अगर आपकी पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियंस जो हैं दे देमसेल्व्स आर लॉ ब्रेकर्स, देन दैट इज अ बिट अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट, but still we cannot lose hope, as they say, and ultimately it is, we have to make elections free and fair to a larger extent, to a great extent, and you have to strengthen Indian democracy. That should be the sole motive, that should be the only motive, right। चलिए, ठीक है, so this can be a probable way forward. So I assume that this is absolutely clear to you. डोंट वरी, कुछ बच्चों ने, एक बच्चे ने लिखा है कि आंसर्स इवैल्यूएट नहीं हो रहे हैं। देखो थोड़ा टाइम लगता है फैकल्टी मेंबर्स को टू लुक इनटू योर आंसर्स एंड टू इवैल्यूएट देम एंड टू गिव यू द फीडबैक, सो हैव सम पेशेंस, दे आर सर्टेनली गोइंग टू गेट इवैल्यूएटेड एंड यू विल बी गेटिंग द फीडबैक एज वेल, राइट। चलिए, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक फॉर द डे। ऑलरेडी ड्यू टू दीज पावर आउटेजेस वी आर रनिंग लेट एज पर द शेड्यूल, ठीक है। तो ये एक पिछले हफ्ते का टॉपिक है ना, जो एक रह गया था टॉपिक सेंसस का, बिकॉज अगेन द एडमिनिस्ट्रेटिव डेडलाइन हैज बीन एक्सटेंडेड, सो देयर इज गोइंग टू बी नो सेंसस दिस ईयर, बट स्टिल लेट्स टेक अ लुक एट these articles which have been there in the newspapers. So the census exercise, which was scheduled to happen in 2021 but was postponed because of the COVID-19 pandemic, has further been pushed to 2023, ठीक है, 2022 में भी नहीं होने वाली। एंड इसके रिगार्डिंग जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, दैट इज द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, हु इज आल्सो द सेंसस कमिश्नर, दैट हैज ऑलरेडी कम्युनिकेटेड टू द रिस्पेक्टिव स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स और
यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को कम्युनिकेट कर दिया है। तो देखते हैं इसके साथ हमारा स्टैटिक का क्या लिंकेज है और डिफरेंस क्या होता है एनपीआर में एंड सेंसस में। राइट, so सबसे पहले देखो सेंसस जो है इट इज जस्ट द एन्यूमरेशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। हर 10 साल में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। इट इज अ डेकेनियल प्रोसेस, हैपेंस आफ्टर एवरी 10 years। एंड हु कंडक्ट्स इट? इट इज द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये किसके अंडर है? इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और यू कैन से द गृह मंत्रालय। राइट, और 2011 में इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ सेंसस। राइट, फिर देखो अब हुआ क्या है कि जब भी सेंसस कंडक्ट होता है द एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स आर फ्रोजन, दे आर फ्रोजन फॉर दिस पर्पस। ठीक है, हर सेंसस होने से पहले। और जितनी भी स्टेट्स हैं, ऑल दी स्टेट्स दे प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन ऑन द चेंजेस इन देयर डिस्ट्रिक्ट्स, इन देयर विलेजेस, इन देयर टाउन्स, या इनके तहसील या तालुकाज या जो भी हैं। ठीक है, किसको? आरजीआई को, दैट इज द रजिस्ट्रार ऑफिस ऑफ द आरजीआई। राइट, अब इसके बाद what the office of the RGI or the census commissioner does is that before the census exercise is to be carried, all such information is taken from the states, है ना, and the UTs, and the boundaries are frozen। ठीक है, कि इन बाउंड्रीज को फिर फ्रीज कर दिया जाता है कि अगर किसी स्टेट ने मान लो कि किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई चेंज किया है, इट हैज आइदर इंक्रीज द एरिया ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट or it has decreased or altered that area, then they are responsible or they are supposed to communicate that to the office of the RGI, and then they are going to take that into record, and just before conducting the next census, just before that they are going to freeze it there. Right, that is a prerequisite for conducting the census. So why we are discussing this is because this is exactly the point of concern which has happened right now. ठीक है, कि अभी RGI ने the Registrar General of India, that is, in that notification, they have said that the deadline for freezing these administrative boundaries, they have been extended to 31st of December 2022. तो इसका मतलब ये हो गया कि इस साल you are not going to have any census exercise। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? I believe इतनी चीज समझ में आ रही है कि ये एक्सरसाइज होती कैसे है ना, what is the relevance and significance of these this freezing of administrative boundaries by the office of the RGI, right? Then let's take a look at the 15th census, which is the 2021 census, which is going to happen in somewhere in 2023. So it is going to be conducted in two phases: house listing and population enumeration. Right, the people will also be getting a self enumeration facility, but apart from that the census officials will also go door to door. But apart from that, if you want to enumerate yourself, कि आप खुद भी अपनी enumeration करना चाहते हो, then that facility is also going to be there। Right, apart from that, certainly ये home to home visit जो है, just like census 2011, that also is going to be there। Right, and for the first time, this is the interesting thing, that it will use mobile application for data collection। Right, certainly we talk about digital India, है ना, and that is certainly an easy thing to be done कि आप easily उसको या उसको simply you just enumerate the data in the mobile application and that gets enrolled or that gets stored in the backend। Right, so that is the first which is going to be there। अब देखो कुछ differences हैं between national population register and the census of India। Right, so I have enumerated all the differences which are there between NPR and census। You can just take a look at these in the PDF which I'll share in the Telegram channel। Right, if you have not joined the Telegram channel, then please go to the description box of this video, you'll find a link for the Telegram channel also। आप वहां जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बट मैं आपको ब्रॉडली समझा देता हूं कि NPR में और सेंसस में डिफरेंस क्या होता है। सी, सेंसस इज अ वेरी ब्रॉड, इट्स अ वेरी वेरी ब्रॉड एक्सरसाइज। जितनी डिटेल्स सेंसस में कलेक्ट की जाती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। द डिटेल्स विच यू कलेक्ट इन NPR, दे आर नॉट वाइड, नॉट दैट वाइड विच आर कलेक्टेड इन द सेंसस। ठीक है, एंड NPR is a register of usual residents of the country, which is obviously carried out by the office of the RGI। तो ये भी it also comes under the Registrar General of India, ठीक है, which act as the National Registration Authority। ठीक है, और usual resident को हम define कैसे करते हैं? We define a usual resident as a person who has resided in a local area in India for the past 6 months or more।
राइट, एंड इंटेंड्स टू रिजाइड इन दैट एरिया फॉर द नेक्स्ट 6 months, कि पिछले 6 महीने से वो हमारे इंडिया की टेरिटरी में रह रहा है, एंड फॉर द नेक्स्ट 6 months ऑल्सो ही इंटेंड्स टू रिजाइड हेयर, ठीक है. एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीआर इज टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिटी डेटाबेस फॉर एवरी यूजुअल रेजिडेंट इन द कंट्री, राइट. सो दैट इज द एनपीआर, ठीक है. ये डेमोग्राफिक डिटेल्स हैं यहाँ पे. आई हैव लिस्टेड ऑल द डेमोग्राफिक डिटेल्स जो हम एनपीआर में कलेक्ट करते हैं, तो ये आप पढ़ सकते हो पीडीएफ में. आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्स राइट नाउ. और जो आखिरी एनपीआर हुआ था वो हुआ था 2010 में, along with the house listening phase of census 2011. So updating was done during 2015 by door-to-door survey of the NPR, right? So that is National Population Register. अब देखो census जो है, it is much more broad-based. It provides more detailed information on demography, economic activity, literacy, education, housing, household, amenities, etc., etc., etc. जो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उसमें, ठीक है. तो वो एनिमिनेटर जो हैं वो क्या डेटा कलेक्ट करते हैं वो सारा मैंने आपको यहाँ बता रखा है. जैसे कि कौन से आप हाउस होल्ड या कौन सी इंडस्ट्री या कौन से ट्रेड में हो, कौन से बिजनेस में हो, वेदर यू आर a professional who's in the service sector or who's running their own business, right? So all these details are taken into the taken in the census exercise, ठीक है. और ये सारी चीजें जो हैं ज्यादा ब्रॉड है कंपेयर टू the NPR, right? So that is the difference between National Population Register and Census of India, ठीक है. ये पॉइंट्स जो हैं, ये टेबल आप पीडीएफ में you can get this table, right? Okay, so with that coming an end to this, moving to the next topic for the day, that is National Commission for Protection of Child Rights and the recently updated guidelines regarding the children who work in cinema or in the entertainment industry, ठीक है. सो देखो यहाँ पे ये 2 आर्टिकल्स आए हुए हैं, है ना. हिंदू ने भी कैरी किया है और एक्सप्रेस ने भी कैरी किया है. देखते हैं क्या इशू है और व्हाट इज एनसीपीसीआर, इसको भी देखते हैं. All right. So first things first, what is the issue is that the National Commission for Protection of Child Rights, that has basically published draft guidelines to regulate child protection who are working, or protection of the children who are working in the entertainment industry, right? ये guidelines ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी, पहले थी ये guidelines, they existed, but now they have been updated. Certain new things have been added because you know that now there are these over the top platforms, OTT platforms, which are now very prevalent in today's entertainment industry, right? Social media and the websites, they all are now going to be under these guidelines. इनके ऊपर भी ये applicable होंगी, right? Okay, so let's first discuss about the National Commission for Protection of Child Rights before we go into the guidelines. तो सबसे पहले देखो, it is a statutory body, it is not a constitutional body because it was established by a law of the parliament, है ना. कोई भी बॉडी अगर पार्लियामेंट के किसी लॉ से एस्टैब्लिश होती है, then we all know that such a body is to be called a statutory body because it has been established by a statute, right? So कौन से लॉ के अंडर एस्टैब्लिश हुआ था? It was Commission for Protection of Child Rights Act 2005, जो 2005 में पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया था, बट कमीशन जो है वो 2007 में एस्टैब्लिश हुआ था, राइट? सो इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर दिस एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. अब अगर बात करें कि किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर फॉल करता है, देन इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, राइट? MWCD इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ द NCPCR, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या जिम्मेदारी है या क्या मैंडेट है एनसीपीसीआर का? तो सर्टेनली एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इन द कंट्री. So all the plethora of things, a host of things that comes under, that is related to the rights of the children, they are associated with this commission. के सारे laws, policies, programs, administrative mechanisms, they have to be in consonance, they have to be in sync with the child rights perspectives which have been enshrined in the Indian Constitution. अभी देखते हैं कि क्या हमारा संविधान क्या कहता है ना, बच्चों के अधिकार के बारे में या चिल्ड्रन के राइट्स के बारे में, एंड ऑल्सो द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, राइट?
नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. आप लोगों को कमेंट में ये बताना है मुझे, जो लोग लाइव हैं दे कैन टेल मी राइट नाउ इफ दे नो, or those who will be viewing it the video later, they can also they can also type the answer in the comment section, that whether India is a signatory to the UN Convention on Rights of Child. Is India a signatory to this UN Convention? Right? Tell me in the comment section. Okay, इसके साथ साथ देखो, for the purposes of these laws, a child is defined as a person who belongs to the 0 to 18 years of age group, right? Below 18 years. ठीक है, तो that is the basics of NCPCR. Now coming to some constitutional provisions. So you all know कि you have the right to education, है ना, कि बच्चे भाई काम नहीं करेंगे, उनका क्या है अधिकार, शिक्षा का अधिकार, as per Article 21A of the Constitution, right? Then Article 23 says that the state has to ensure that there is no forced labor which the children are made to do, right? So there is prohibition on any type of forced labor. That is another provision in the Constitution, in the chapter of fundamental rights itself. Then you have Article 24, again, you know, providing for the safeguard of the rights of the children. That is, a person or a child under 14 years cannot be employed to perform any hazardous work in any factory or any mine, है ना. जैसे हम सब जानते हैं कि शिवकाशी जो है, it is very famous for the production of क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स. सो बेचारे ये बच्चे कई बार वहां से उनको रेस्क्यू किया है ना, स्टेट पुलिस ने और अदर एजेंसीज ने. सो दैट इज अ वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स एज प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 24. देन यू हैव आल्सो द आर्टिकल 39 टॉकिंग अबाउट such rights, that the health and strength of workers, men, women and the tender age of children are not abused. ये भी ध्यान में रखना है, right? So although it is not a fundamental right, but still that is a direction to the state which the state has to follow, है ना. चलिए ठीक है. So these are some of the constitutional provisions that deal with the rights of the children, है ना. Okay, फिर देखते हैं कि अब जो गाइडलाइंस हैं उसमें क्या अपडेशंस हुए हैं, राइट? सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, देखो जो ये गाइडलाइंस हैं इसका पूरा नाम क्या है, गाइडलाइंस टू रेगुलेट चाइल्ड पार्टिसिपेशन in the entertainment industry. That is the complete title of the guidelines, and these were initially issued by the National Commission for Protection of Child Rights in the year 2011. So this is not for the first time that such guidelines have been issued, but now the scope of these guidelines has been expanded, it has been broadened. How it has been broadened? That now they are going to cover social media and over the top platforms, right? Social media and OTT platforms, now it is the first time that these guidelines are going to cover them also. अब कुछ changes देखते हैं, है ना, before coming to an end of this session. तो देखो नई guidelines या कह लो कि जो नए editions हैं by the NCPCR, that they relate to reality shows, movies, news and informative media, then content on OTT platforms, content on social media. These are some of the things. ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हैं वो नई चीजें जो ऐड हुई हैं in the guidelines. So if a minor is participating in any shooting, then a child below the age of 6 years, he or she will not be exposed to harmful lighting, irritating or contaminated cosmetics by the entertainment industry, right? They cannot be shown consuming or imbibing alcohol or smoking. Certainly that is a good thing, है ना, कि ये prohibition हो कि बच्चों को इसमें ना indulge किया जाए. Then a child cannot be exposed to ridicule, insult, discouragement, harsh comments or any behavior that could affect their emotional health. देखो ये किस लिए जरूरी है, because the children, they have a very impressionable mind. They have a very impressionable mind. What does that mean? That if they are insulted or if they are discouraged or if they are ridiculed, then that really affects them psychologically. That really affects their emotional health in an adverse manner. And that stays for that, that stays with the child for a very long period of time. इसीलिए जो है यहाँ पे NCPCR, it wants that no such thing should be done with the children which stays with them for a life, right? That sounds logical also कि भाई ये बच्चे हैं, इनका दिमाग impressionable है और ये काफी टाइम तक इनके साथ हो सकता है ये चीजें रहें, and that might lead to an adverse effect on their emotional health, right? Then the producer of that particular content which is to be displayed on the
in the entertainment industry, they will have to obtain the permission of the DM or the DC for the participation of a child in their show, right? And they will also have to run a disclaimer which says that, you know, all the measures were taken to ensure that there has been no abuse, neglect or exploitation of the child while this show was being shooted or it was being shot, right? Then अगर कोई भी फॉलो नहीं करता है इन गाइडलाइंस को, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे OTT कंटेंट मेकर्स हो, then there are going to be punishments which are going to be there in the guidelines themselves, right? Including penal provisions and imprisonment of the concerned producers of that particular content or that particular reality show. ठीक है, इसके साथ देखो, there has to be one parent or at least a guardian or a known person of that particular child who has to be present during the shooting. कि भाई उस बच्चे को आप अकेला वहां नहीं छोड़ोगे, कोई गार्जियन कोई पेरेंट वहां पे एटलीस्ट एक प्रेजेंट होना चाहिए, ये इंश्योर करने के लिए कि हाँ जो चाइल्ड के राइट्स हैं वो अब्यूज या उनको वायलेट नहीं कर रहा प्रोड्यूसर, ठीक है? और इन्फेंट्स के लिए देयर हैज टू बी अ रजिस्टर्ड नर्स हु हैज टू बी प्रेजेंट अलोंग विद द पेरेंट और गार्जियन, राइट? सो दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है? अब ये कितना फीजिबल हो पाता है ये तो इसकी इंप्लीमेंटेशन के बाद ही ओनली वी कैन टेल, बट यस, इंटेंट इज एटलीस्ट गुड. Then at least 20% of the income which the child is earning shall be directly deposited in a fixed deposit account in a nationalized bank in the name of the child, which may be credited to the child on attaining majority. मतलब देखो 18 साल से कम जब तक वो बच्चा है, until then you can have or you'll have to mandatorily get a fixed deposit done in the name of that child, right? And after that person has attained 18 years, then you can give that money to the child, ठीक है? So that is a good a good intended provision which will ensure that the child gets the money which he or she has earned before he was adult, ठीक है? चलिए, so with that we have come to an end of this session, but before you people go, let me just share with you once again an initiative that we are running. ये HPSC का अभी announcement हुई थी last week ही, that जो लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज which is conducted by the Haryana Public Service Commission, executive branch, है ना, HCS exam जो लोग दे रहे हैं, first earlier the exam was scheduled to be conducted on 10th of July. So we were running our test series according to that date by the HPSC, by the commission. But since there was an announcement by the commission that now the date or now the exam will not be conducted on 10th of July, but it will be conducted on 24th of July. So it has been postponed from 10th to 24th. So we have also changed our schedule in the prelims test series, which is being conducted free of cost, right? Which is a very fine, high quality test series, updated with current affairs for Haryana also, updated with current affairs for your national level current affairs also, and along with that, Haryana economic survey as well. You also have the economic survey for the state of Haryana, that is Haryana economic survey. The questions are also being incorporated from the economic survey of the state of Haryana, right? So this is something which I don't think you are availing anywhere else. So make the most of this initiative, right? Do enroll in this test series. Up directly you can scan this QR code and you can register yourself, or you can visit the description of this video. There also you will find a link through which you can register yourself, right? So there are 8 general study tests which are full length tests, and also there are 2 CSAT tests, ठीक है? You can come if you are in Tri-City itself, you are residing here in Chandigarh, Mohali or Panchkula or in the nearby areas, you want to come and you want to write it offline, then it is absolutely available free of cost offline also, right? And if you are residing in some other area, you are residing in Haryana, you are residing outside of Haryana, but you are appearing in the exam, you cannot visit offline, then you can appear online. It is available both in online and offline mode. Choice is yours. It is free of cost, both online and offline, right? So do enroll in the initiative and get yourself evaluated before the commission does, right? So with that, I have come to an end of this session. I believe that you'll certainly forgive me of all the power outages which we had today, which we have had today, right? Of course, for no fault of mine, but yes. Chaliye, so do enroll in the test series. I'll see you there, and I'll see you next week also on Monday. Until then, stay safe, study well, Jai Hind, and bye-bye.